Good morning, children. Today we will discuss the directive influence of functional group in monosubstituted benzene. What is the meaning of monosubstituted benzene? मतलब benzene में already there is a substitution of a group. Let me take the group as say Cl. So it is chlorobenzene. Chlorobenzene में benzene already has a substitution of chlorine. This is called as monosubstituted chlorine. Now this monosubstituted chlorine में what is the influence of this chlorine over the incoming group will be called as the directive influence of functional group in monosubstituted benzene. मतलब ये क्लोरीन का एक पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस होता है for the incoming group. Suppose again we carry out halogenation. तो मतलब एक और Cl plus has to be added. Now where is the Cl plus added depends on the type of this group. That is the substitution of chlorine is influenced by the group which is already present on the benzene ring. और उसी को हम कहते हैं directive influence of functional group in a monosubstituted chlorine. So there are two type of influences. One is ortho para directing groups है present. तो किस तरह से incoming group where does it get substituted? If the group is ortho para directing, then the incoming group will be substituted at ortho and para position. Ortho मतलब the second position. This is the first position because here the chlorine is there, that's the functional group. उस कार्बन को नंबर 1 देना चाहिए and the second carbon here. So second position, this is your ortho position, इसको हम ortho position कहते हैं. यहाँ से भी this is also called as ortho position and the fourth position is called as para position. So any group if it is ortho para directing which is present on the benzene ring, then the incoming group in the next substitution should go only at ortho or para positions or both ortho and para. Okay. So which are the different ortho para directing groups? It is CH3, CH2, CH3, C6H5. They are all ortho para directing. Okay. Cl, Br, I, OH, OCH3, OCOCH3, NH2, NHCH3, NH, NCH3 twice. They are all ortho para directing. Now how does this group present over the benzene ring? How does it make the second substitution take place at ortho and para only, or why does that group go into ortho and para position? Let us take an example and understand it. Suppose your benzene ring is having say one of the ortho para directing group. Let us take OH. Okay, OH. OH है ना ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो अगर हम OH का क्लोरिनेशन कैरी आउट करेंगे तो Cl किधर अटैच हो जाएगा? इट विल अटैच एट द ऑर्थो पोजिशन और एट द पैरा पोजिशन, सेकेंड और फोर्थ. ठीक है. अब यहाँ पे दिस इज द सिचुएशन, दिस इज योर बेंजीन रिंग सब्सटीट्यूटेड बाय फिनॉल बाय OH विच इज नोन एज, अब ये इसको क्या बोलते हैं हम, कंपाउंड का नाम है फिनॉल. ओके. नाउ व्हाट इज हैपनिंग? This pair of electron is moving here. Okay. So now how is your situation? यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ गया OH, यहाँ पे O के ऊपर प्लस चार्ज आ गया. अब यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ये बॉन्ड, बिकॉज कार्बन कैन हैव ओनली 4 bonds, so already it has 4, 1, 2, 3 and 4. But if a double bond comes here, then the carbon has how many? 1, this is 1, this is 2, this is 3 and this is 4. Already 4 है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये जो बॉन्ड है वो वहाँ होना नहीं चाहिए. So what happens? This pair of electron moves here and you have a negative charge for that electron being substituted there. बाकी वैसे ही रहेगा. Okay. Now resonance occurs. What is happening? This electron pair moves here. If this moves here, then this has to move here. Okay. So you can observe here कि the electron pair has moved at this position. So you have your double bond here. Also you have your double bond here, and the electron pair which was
present as double bond has shifted its position here, okay, and now a negative charge is present there, and here it is same only, that O will have a positive charge and it also has a non-bonding pair of electron, and it will be in this manner. Okay. Now what happens, this pair of electron moves here, and because of which the double bonded electron pair has to go to the para ortho position. So that will be giving you the compound in this manner. This is your electron, negative charge, double bond O, okay, H this way, and this oxygen will carry a positive charge. So what do you observe? Where do you observe these negative charges? These negative charges are present at this position, which is the ortho position. This is the para position, and this again is the ortho position. So electrophile, which is having a positive charge, will get bonded at which positions? Then where it is having negative charges, isn't it? So electrophile gets bonded at ortho or para position only. That is why it is ortho para directing group. And lastly, what do we have? This electron pair will move here, and this will move over oxygen, and finally you have your compound again as O with two pair of lone pair electrons, and this way. Clear? So that is the reason why if OH is substituted over benzene, then the other groups will be directed, other groups in the sense the electrophiles which are supposed to get added up, which are supposed to get substituted at the benzene ring, it will occur only at the ortho position or the para position. Okay? So there, that is the region where you have the negative charge. So therefore it will get substituted over there. Okay? Similarly, any other, even if you take chlorine, एक chlorine का लेके देख लेते हैं, how does that occur? See, chlorine also similar way only. It has electron pair here, so this electron pair will move into this position, and you have so it is the same way as the phenol. So let me take another one where you don't have a lone pair. Okay, for example, so Cl also behaves the same way as OH, because Cl also has a lone pair of electron. Now suppose if I take methyl group, ये methyl group में कैसा होता है? There is no lone pair present over methyl group, isn't it? Then how is the situation? तो वहाँ पे क्या है? Hyperconjugation plays the role. Here this pair of electron will move to this position. So now how is the situation? You have methyl, यहाँ पे तो H है bonded, यहाँ पे भी H है bonded, लेकिन ये वाले H के साथ there is no bond, and this double bond occurs here. Okay, because of that double bond, this pair of electron moves here, so this will have a negative charge at this position. Okay, rest remains the same. Now resonance occurs, ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा. Okay, so now how is the situation? Here bond, here negative charge, okay, here bond, double bond, CH, here there is no bond, इधर H2 लिख लेती हूँ. Okay, so there is no bond here. Again this will move here, so this will move here. So here with CH3 the hyperconjugation is playing the role, okay, not the lone pair of electron. So you have here your bond, this pair of electron moves here, okay, and the negative charge appears here, double bond CH2 and H with no bond. Okay, so then this electron moves here and the electron will go back here. अब यहाँ पे भी क्या है, हाइपरकॉन्जुगेशन में भी ये H कैन रोटेट. ओके, यहाँ से बॉन्ड वहाँ ले लिया, सो हाइपरकॉन्जुगेशन इज ऑल्सो प्लेइंग अ रोल देयर, एंड यू हैव बैक CH3. So where do you find the negative charges? You find at ortho and para position. That is why it is ortho para directing. Okay, electrophile which carries a positive charge will always get directed towards the ortho para directing groups. Okay.
at the ortho and para position, that is. Now there are certain groups which are meta directing. What do you mean by meta directing? Whenever you have benzene ring substituted by, say, suppose a meta directing group like NO2. So the second substitution will take place at meta position. This is your meta position. The third position or the fifth position. This is meta position with respect to NO2, or it can be the fifth position. This is also meta position. Followed? So either substitution will take place at these two places. Now why does it occur that way? Let us see how it occurs at that way. Again benzene ring, okay, benzene ring, this is N, I will open it out, it is NO2 ना, तो ऐसे होता है. The non-bonding pair of electron of nitrogen is given to oxygen, okay. So here oxygen will have two lone pair of electrons, and so this is how your NO2 substituted benzene will look like. Now NO2, no, it is meta directing, it is a withdrawing group. So what happens, ये जो oxygen, it is more electronegative. So what happens, this pair of electron moves over oxygen. So then there is, how many bonds are there? There is only 2 bonds. So what happens, ये इलेक्ट्रॉन का पैर किधर चला जाता है, नाइट्रोजन के साथ. और अभी तुम्हारा स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, यू कैन ऑब्जर्व हियर, यहाँ का इलेक्ट्रॉन पेयर हैज मूव्ड हियर, सो दिस विल बी अ डबल बॉन्ड हियर. दिस ऑक्सीजन एरो के साथ ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन विल हैव 1 2 3 4 5 6 विथ नेगेटिव चार्ज. एंड ये कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो ये कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. रेस्ट रिमेन्स एज इट इज. क्लियर? ओके, सो इट विल मूव देयर. नाउ व्हाट हैपेंस, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये रीजन ऑफ हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो वो वहाँ चला जाएगा. सो दिस विल मूव हियर, and now you have your structure this way, double bond N O, यहाँ O with minus charge this way. Okay, so ये जो प्लस चार्ज है वो हट गया, वहाँ पे एक बॉन्ड आ गया है, लेकिन ये वाले कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, and this bond will remain as it is. Okay, now looking at this pair of electron will move here. So what is our next structure? You will have this way. So this is the bond will be formed here. Already a bond is here. Now this carbon has lost its electron, so it will carry a positive charge. यहाँ पे double bond N O O with negative charge. Negative charge. Okay. So what do you observe here? कि यहाँ प्लस चार्जेस ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे है. अब प्लस चार्जेस होगा तो इलेक्ट्रोफाइल विल इट गेट बॉन्डेड देयर? नो, इट विल नॉट गेट बॉन्डेड एट दीज पोजिशंस. ऑर्थो या पैरा पोजिशंस पे इलेक्ट्रोफाइल बॉन्ड होगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के पास भी प्लस चार्ज ही होता है. सो विच इज़ द प्लेस अवेलेबल फॉर देम टू ज्वाइन? इट विल बी कंपैरेटिवली हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला रीजन है meta positions. So therefore the substitution takes place at meta positions. Clear? Okay, one more example we can take. Let me take say CHO, yeah, COOH, either way. Okay, so this is your C double bond OH, CHO molecule. Same way, what happens, this pair of electron will move towards oxygen. Oxygen is more electronegative in nature. Okay, so then what will happen, this pair of electron move here, because carbon should have 4 valency. Okay, to satisfy that valency it will move there. So you have double bond C O with negative charge, and here you will have a positive charge, because carbon has lost its electron towards the that is a double bond formation has taken place there. So here the plus charge appears. Okay, looking here,
what will happen? This electron pair will move here and a positive charge will now appear for this carbon from where the electron has moved. So this is your plus charge. Okay, यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे बॉन्ड आ गया है, डबल बॉन्ड CO minus here H. Okay, again what will happen? Now here I didn't draw the last structure. Last में क्या हो जाता है, ये pair of electron इधर आ जाएगा and again it gets back to the first case. Okay, we'll draw it here. So here the bond formation will take place here and now the positive charge appears at this particular carbon. Okay, so here positive charge appeared, double bond CHO. So positive charge here. Again what will happen? This electron pair will move here and this pair of electron pair will move back here and again you will get your original compound CH double bond O, वही मिल जाएगा. So what do you observe here also, that at the ortho and para positions the positive charge is there. So it is not likely that an electrophile will go and attach itself there. So whenever there is a meta directing group, this is the reason why the next group attaches at these two positions only, that is at the third position or at the fifth position. With respect to third position we can say this is, अगर ये group substituted है तो naturally 1 2 3 position ये होगा. Second substitution अगर इस position पे हो रहा है तो ये meta है, या तो इस position पे हो सकता है meta. हम third और fifth करके नहीं बोल सकते, it's a wrong way of saying, because third position always meta position मतलब third position. Clear everyone? So that is the reason why meta directing groups, the next substitute, if meta directing groups are present on the benzene, then the next substitution will take place at meta position. और वहाँ पे ortho positions पे और para positions पे electrophile का substitution takes place, because at ortho and para position there are negative charges where the electrophile will have the chance to go and attach itself. ठीक है? So this is what we call as the directive influence of the functional group which is present already on the benzene ring, or we call it as monosubstituted benzene. Okay? Now let us do these questions. How will you convert benzene into para-nitrobromo-benzene? So benzene है, अब benzene को you have to convert it into para-nitrobromo-benzene. Okay. Now look here, नाइट्रो भी ग्रुप है, ब्रोमो भी ग्रुप है, लेकिन कौन से पोजिशंस पे होना चाहिए वो? नाइट्रो एंड पैरा शुड बी, नाइट्रो एंड क्लोरो शुड, ब्रोमो शुड बी इन 1-4 positions, that is it should be at the para positions. So benzene, first should you carry out nitration or should you carry out chlorination? Because the position of the second substituted element should be at the para position only. So among them bromo and nitro, bromo is ortho para directing while nitro group is meta directing. तो अगर तुम बेंजीन में पहले नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दोगे तो उसका जो नेक्स्ट सब्सटीट्यूशन है, जो हम ब्रोमिनेशन कैरी आउट करेंगे, तो वो ब्रोमीन किस प्लेस पे अटैच होगा? मेटा प्लेस पे. बट वी डोंट वांट मेटा, वी वांट पैरा. सो फर्स्ट वी विल कैरी आउट द ब्रोमिनेशन. सो Br2 in presence of FeBr3, and first you should get the bromobenzene. ब्रोमोबेंजीन बन गया. अब नाइट्रेशन कैरी आउट करो इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 H2SO4. देन जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ नाइट्रो, दैट इज NO2 प्लस, वो किस पोजीशन पे जाएगा? या तो ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा या पैरा पोजीशन पे जाएगा. हमें पैरा पोजीशन चाहिए तो वी विल हैव आवर प्रोडक्ट एज पैरा नाइट्रोब्रोमोबेंजीन. ठीक है? अगर हमने पहले नाइट्रेशन कैरी आउट किया होता तो बेंजीन रिंग पे नाइट्रो ग्रुप आ जाता.
अब नाइट्रो ग्रुप कैसा रिएजेंट है, कैसा ग्रुप है, वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो ये जो फिर हम जो ब्रोमिनेशन कैरी आउट करेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इट विल बिकम मेटा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन, एंड वी डोंट वांट दैट, वी वांट पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन। दिस इज योर पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन। क्लियर? ठीक है। अब हमें चाहिए मेटा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। अब बेंजीन के साथ पहले हमें क्या कैरी आउट करना चाहिए, शुड बी कैरी आउट नाइट्रेशन और शुड बी कैरी आउट क्लोरिनेशन, मेटा पोजिशंस पे चाहिए। सो बेंजीन रिंग यू विल फर्स्ट कैरी आउट नाइट्रेशन, ओके, विथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 H2SO4 and you get NO2 introduced onto the benzene ring. अब कैरी आउट करो क्लोरिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, देन द क्लोरीन विल गेट सब्सटीट्यूटेड एट द मेटा पोजिशन, है ना, क्योंकि NO2 जो है वो मेटा डायरेक्टिंग है, वो जो नेक्स्ट ग्रुप आएगा उसको मेटा पोजिशन पे ही सब्सटीट्यूट होने देगा। सो यू हैव हियर NO2 एंड क्लोरीन, ओके, सो इट इज मेटा नाइट्रो क्लोरो। अब ये दोनों देखो मेटा पोजिशंस पे है, अगर हम इसको क्लोरोबेंजीन बोलते हैं तो ये मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन ही हुआ ना। सो क्लोरीन एंड नाइट्रो ग्रुप बोथ आर एट 1,3 पोजिशन, मतलब मेटा पोजिशंस। सो दैट इज हाउ यू कैन कन्वर्ट बेंजीन टू मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। नाउ लेट अस टेक नेक्स्ट वन, पैरा नाइट्रोटोलिन। बेंजीन को पैरा नाइट्रोटोलिन में करना है। अगेन पैरा वर्ड आ गया, मतलब हमें ऐसा ग्रुप पहले इंट्रोड्यूस करना चाहिए जो कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अब नाइट्रो ग्रुप तो मेटा है, टोलिन मतलब देर इज अ मिथाइल ग्रुप। टोलिन क्या होता है, बेंजीन रिंग विथ CH3, दिस इज कॉल्ड एज टोलिन, ठीक है। तो ये पहले हम बेंजीन को टोलिन में कन्वर्ट करेंगे, और टोलिन में कन्वर्ट करने के लिए विच इज द रिएजेंट यू विल यूज, द एल्काइल हैलाइड in presence of a Lewis acid like AlCl3, first toluene is formed or methyl benzene is formed. This is only what we call as toluene, ठीक है, toluene बन गया। Now carry out the nitration of toluene. So nitration of toluene you carry out by HNO3 H2SO4 and it gives you para nitrotoluene, okay, para nitrotoluene. Okay, so you have to decide which group to be introduced first. Accordingly you have to carry out the reactions. इधर हमने पहले फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन कैरी आउट किया, ओके, दिस इज फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, दिस इज फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, देन कैरी आउट नाइट्रेशन, ओके। अब इधर एसिटोफिनोन चाहिए, इसके लिए पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि व्हाट इज एसिटोफिनोन। Acetophenone is benzene ring COCH3. This is phenyl methanol, phenyl ethanol, okay. So ये इधर कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस्ड हुआ, COCH3. COCH3 मतलब एसाइलेशन कैरी आउट हुआ, COCH3 प्लस इज द असाइल ग्रुप, असाइल इलेक्ट्रोफाइल. So benzene ring you should carry out acylation. Acylation you can carry out either by CH3COCl or you can use acetic anhydride and get the corresponding acetophenone. दोनों ही acetophenone देगा, COCH3. This is your acetophenone, ठीक है। अगर CH3COCl यूज़ किया तो HCl प्रोडक्ट बनता है, अगर CH3CO ट्वाइस O यूज़ किया है देन एसिटिक एसिड विल बी योर बाई प्रोडक्ट, acetic acid will be your byproduct, okay. So this is how you can understand directive influences of the functional group which are present in a monosubstituted benzene, ठीक है। So these kind of conversions you can have, okay. In the textbook there are various other conversions also, alkynes, alkenes, in सब का भी conversions है, that also you should try, okay. So this completes this chapter here. Exercise solutions you should try out. I will send you the PDF for the exercise solutions, okay. Thank you.